Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome and thanks for joining us today's webinar. This is 15th session of our HIV awareness, prevention and education project in Pakistan. And this is designed and led by APPNA-MERIT HIV Committee. This project aims to reduce HIV stigma, increase HIV awareness, and increase knowledge about the disease, along with from this year starting, increase the HIV capacity and support the HIV ART centers. This is a project which will go from 2022 to next year. And please note that this committee is not affiliated with any political party in Pakistan. This project is a volunteer academic activity. All views expressed in these webinars are presenters' own views and they do not reflect any institution. Our moderators today are Dr. Saima Abbas and myself. And so let's see how it goes. Dr. Hamad is not able to join us today. Dr. Abbas is an infectious disease physician. She is working in the USA and is co-chair of the APPNA-MERIT HIV Committee. So Dr. Abbas, please start. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Before we begin, I would like to, as a congregation, start with the Surah Fatiha for all the flood victims in Pakistan, as well as all the HIV victims so far. Bismillahirrahmanirrahim. Usually we start with an introduction, so I'm going to share my screen. Can everybody see this? Yes. Okay. So the title for today's webinar is Current HIV Treatment and Care Delivery Model in Baluchistan, Identifying Gaps and Challenges. So schedule for today's webinar is we will do the introduction. Then we have our main speaker, Dr. Khudadat Khan, Dr. Malik Muhammad Omer, and Dr. Bushra Jamil are the two panelists. And we are very privileged to have a surprise guest speaker, Dr. Basir Khan Achakzai. And once we are done with the introduction, I think we will have him start off with some opening remarks. So let's begin. I'd like to create a framework for our webinar. And so I picked this slide from Dr. Arshad Altaf, who is a World Health Organization representative, and he was part of our webinar on iatrogenic transmission with HIV. This is sourced from the UNAIDS, and this is from 2021, HIV Test and Treatment Cascade. So if you look at the bars, the blue bar is the estimated people living with HIV, and the pale red bar next to it is the people living with HIV who know their HIV status. So you can see this is the first big knowledge gap, that out of 240,000 estimated people, we only know the status of 50,000. If you go towards the next bar, which is how many of the 50,000 are on ART. And so these are mostly people, I would hope that between the 50,000 and these 30,000 that they are registered at the ART centers. And as you go towards the right, you see that the number and the bar starts to shrink. So the people who are tested for viral loads are 11,000. And the last bar is people who are actually virally completely suppressed, which comes out to be only 20% out of the 30,000 who are on antiretroviral treatment. So the red bar, which is highlighted, it points out to what are the issues with attrition, lost to follow-up,
poor patient monitoring and ART adherence. And we are hoping that today's webinar will help us get to the root causes of these issues. So what are our objectives? So APPNA-MERIT HIV Committee has no political or financial conflict of interest, and our platform is mainly to understand, support, and drive progress. So we are not here to blame, and we don't want to get anybody into any kind of trouble, but we think that it is high time that these issues are brought to the surface and all the stakeholders, they are brought to a conversation so that things can begin to be analyzed and examined. So the most important objective that has been very painful for us has been the major disconnect between the major stakeholders affecting the hub of HIV care delivery, which is the ART centers. So just to remind everyone, and we keep talking about these major stakeholders in all our webinars, the funding agencies, which is the Global Fund, the UNDP, which is the primary recipient, the NACP and the NGOs, which are the secondary recipients, I would say. So those are the first major stakeholder, the funding agencies, and they are providing us with free ART. The second major stakeholders are the healthcare community, the providers, the staff in these ART centers who are on the actual front lines of this HIV epidemic. And the last, most ignored, neglected, and the one who's actually suffering is the stakeholder of the consumer, which is our people living with HIV. And it seems like there is a disconnect between these major stakeholders, which is really not benefiting anyone. So hopefully we can identify some of the gaps. Number one, in knowledge. So I sent out about 20 questions to our main speaker and to our panelists to help answer our knowledge gaps and the ones for everybody's education. And then we hope that our webinars will also point to a very painful gap in attitude, which is mainly focusing on denial, stigma, and inaction. And then last of all, what are the practice gaps, whether these are administrative, whether these are healthcare governance issues, what is the root cause of attrition, the loss to follow-up or death 1 year after enrollment or ART initiation? What is the root cause of poor patient monitoring, ART adherence, and the very low retention in care, which is only 18% at the end of 1 year? So in order to begin the conversation, we are delighted to have Dr. Abdul Basir Khan Chagzai, who has a very long biodata, but I tried to cut it down to the most pertinent to our conversation today. So he is, mashallah, a senior director with the National Health Programs and Regulation, National Nutrition Program Manager affiliated with the Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination. He has vast, almost 28 years of professional experience with public health management and administration, especially carrying out health situation analysis, forecast planning, and communication strategies, which are so pertinent to the HIV conversation. And previously, he has managed various public health programs at the federal level, like malaria, HIV, AIDS, TB, influenza, hepatitis, and LHWS program. And to bring him to the current important focus, he is the national focal point for the flood response in Pakistan. So he has a huge burden on his shoulders. We appreciate your participation. But Dr. Basir, please enlighten us. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saima. Thank you, Dr. Professor Gilani Saiba. Thank you, Bushra Saiba. Thank you, Umair, Dr. KD, Dr. Fuledat, my very dear friend. Actually, I will start with one thing, and that is on a very positive note that I'm extremely thankful to Dr. Fiza when she came. And I think she must have understood by now then when approaching or knocking a door of a government official, so how difficult it is.
there are so many hierarchy and there's so many things. But when Dr. Fiza approached us to Pakistan or the Ministry of Health. So I think we were lucky to have her and the APPNA-MERIT committee people. And she's a little bit also lucky that she just directly came to me and to us. And that was the reason then when she came, so all possible support and all possible efforts were there on the ground to accommodate her and to listen to her on the policy level. I remember that we were meeting the DGs, we were meeting the higher ops at NIH and all together, and then the Sindh government, and we have the honor that we even meet the minister level people. So and telling the people of Pakistan, and then of course the study which Dr. Fiza did here in Pakistan in a nutshell, when she felt and she took an advice from us that Pakistani physician and Pakistani people needs to be engaged by the Brown University and the APPNA-MERIT committee. And that was the very positive note that since that day, after the Larkana outbreak, when we went there and when came back, and so this process then started. And then honestly, I'm extremely thankful for all your team and Dr. Fiza and your engagement with our people, and even not only with the public sector, but with the private sector as well. So I'm thankful to you. And that was an opportunity which, if you remember, Dr. Fiza, which we discussed with all of my team here, Dr. Saima Paracha here, Dr. Umair, on those days, Dr. Kayed and other people, that one thing which we need is that to how to build our capacity of our physician and how to go about it and how to expand our program. It is evident that if we divide or today, for example, your in accordance to your question, which 20 questions you shared, I've gone through it. So if you just look into it, that where we stand today, my first answer will be as a ministry that we are far behind whatsoever the expectation of the HIV community or the international community. We are far behind. If we talk about our people on ART, if we talk about the people who know their status, 50,000 out of 240,000, 240,000, and the viral load suppression level, which is very, very low, and also the adherence. So before starting my this division and how to go about it, I have divided into three things just in very few minutes. Number one is that where we stand, that my answer is that we are far behind. Now, where we want to go, that is a question mark. And number third, that how to go about it. So just to start with that where we stand the response of HIV here in Pakistan, like it is not because of Dr. Fiza, honestly speaking, that our physicians are poor or our physicians are not hardworking, or our system is not working. But the issue is that the ownership by different provinces is different. Our provincial government sometime, I remember Dr. Umair will second me, that there a stage came when the provincial government was, reluctant to share data with us. And there was, and though I sent, I think when I was there, I sent so many teams to just inquire about that what is the reason that these people are not sharing the data. So Sindh was behaving differently, Khyber Pakhtunkhwa was differently. Even Dr. Fiza, if you recall that, I personally, we have developed a PC1 per Khyber Pakhtunkhwa. And that, look, this is your PC1, how to go about it. So just take the resources from your provincial government. And even for resource allocation, I went to their secretary or their DGs and to talk about it and to convince them and to make certain awarenesses. Okay. So the first thing is that our government level ownership is very poor, honestly speaking, number one. Number two is the response which the Global Fund and the government of Pakistan, this relationship
over the period remain very tricky. Tricky in the sense that sometimes, for example, you are not trusting your public sector PR, and the other way you are more focusing on private sector PR, and the private sector PR role is like this one, and the public sector PR role is this one. So you are giving less resources to this one, and you are giving more resources to the private sector. So there were certain issues, and those issues, they went beyond all limitation. And myself and Faisal Sultan, we tried our level best, and then non-professional people came into it, like the bureaucracy, and they decided, sometime. All of a sudden they imposed on us the ASP, the additional safeguard policy, which was not acceptable to the provinces. So that also brought a little bit gap into it. And then what to talk about Baluchistan and what to talk about Khyber Pakhtunkhwa, where the 80% problem where it was like Sindh and Punjab. So if they are reluctant to accept your policies or your commitment with the global fund, so they both clearly Mm, uh, this, Malak Umair has all the record in his pocket that the provincial government declined to support us or to help us. So now, but and secondly, very recently, because you have a limited time to share with you, that recently there was a huge who and how between the PR and the community where the services was lying, where we had to support them, where we have to strengthen them. So they all of a sudden, the UNDP as a PR, they created a lot of mess, and so, and who and how and strikes and so many things. So when the issue came to us, so it came directly to the minister and the federal secretary. And then I realized on the appeal of the friend like Umair, like other people, that what is going on? We should, this is public money, it is government money, it is not somebody else's money, it is not UNDP money, not UNHC's money. Anyhow, so when we start engaging with the UNDP, so the UNDP came, initially their approach was so wrong in context of addressing the stigma among the people or the discrimination among the people. Rather, they were superimposing, and they are taking the communities to more corner. Okay, so then I collected my own wisdom, and we discussed with the UNDP higher ops, their country chief, and my secretary. And then a stage came when the secretary asked them seriously, and that directed me and my team, along me and my another special secretary, that go and talk to them and speak to them and sit with them. So now, Alhamdulillah, a good news for all of you, that now the ministry has taken all the lead of that. Whatsoever the UNDP will be doing, we will be a foresee mechanism, and I will personally be looking into it. Whatsoever they do, whatsoever response that what they select, what they reject, what they do, what will be their activity, how they will be expanding the programs, and I will be looking after that, and I will be part and parcel of their team, me and my team. So that is a good news, and they are, and I have explained to them. Rather, I have changed my language. My language 2 years back was something else, but now I've changed my language. That look, you have a very short period, your burn rate is very low, so we should expand in a way that we should reach to the maximum of the people. Now I'm coming to Baluchistan. The Baluchistan scenario is completely different. Baluchistan is a society where we are not focusing on other diseases which are very common, which are less stigmatized, less discrimination in that. We are even not focusing on that. So what to talk about HIV/AIDS? So we want to engage with at the highest level, that we will be getting more resources for HIV/AIDS, and with this UNDP, this opportunity which Allah Pak has given to me. So I will be definitely asking, and in accordance to your webinars or your discussions or your recommendations, I will be asking them that how to strengthen the Baluchistan team, how to strengthen the Baluchistan HIV response, how to open more ART center, how to reach to the maximum people, and to involve so many other physicians. Not only, we should not be focusing on only on Quetta. Dr. Fadadad will be coming out of the BMC. He will be going to Loralai, he will be going to Job, he will be going to Fuzdar, to Mustung, to other Noshki, Haran, and Gawadar. So we will be, but how KD will be going? KD need a little bit more strength from us, and strength from UNDP, and strength from the government of Baluchistan.
So that is my policy, my strategy for next week, inshallah, in 2 or 3 weeks. And he will see a little bit change, you will see a little bit change, that how to make more. And this capacity building which the APPNA-MERIT is doing is a great and wonderful job. And I will definitely be asking them to carry forward this agenda in coordination with you and in support with you, like a partnership like with you. So in each and every such kind of webinars, they must be present, the technical people must be present, and they will be giving their thoughts as well. And when the public and private sector thoughts are combined together, so then only then we can do something. We are not deficient, for example, in ARVs. Madam, if you just look into the countries where the ARVs, there are a lot of shortage of ARVs. In Pakistan, alhamdulillah, we do not have a shortage of ARVs, but still we are not adhering the people who are in need. We are still, and there are 2 or 3 other mechanisms which I have just advised the day before yesterday or 3 days before, that we will be focusing to socially or economically strengthen those people who are HIV positive. So a new era will come, inshallah, soon in a couple of weeks. And Umair, my team, all the CMU team, they are aware of this processes. But I will put agenda in front of them once I take a mature step from the ministry side and from the UNDP side. So this is my thoughts about it, that how to strengthen the response and how to expand the response. And we need to strengthen Dr. Fadadar and his team. Not only one physician, we required at least in Baluchistan 10 physicians who are responsible for 10 HIV ART centers, and only then we will be reaching to those people who are in need. And with regard to stigma and discrimination, Baluchistan, yes, there are certain taboos and issues, but as far as KD approaches, I have seen, and the people who are there, so they are coping with that. And Alhamdulillah, we are not much behind as the Punjab people behave or the Sindh people behave. We are not that much, in the stone area. We are, coping with that situation. And in last but not the least, I am extremely thankful for Dr. Saima and Dr. Gilani for your good wishes. And of course, as you mentioned, that I am just coming from Baluchistan in connection of these flood issues. And in flood, even UNDP had certain resources for reprogramming. So I got a hold of them, and I asked them that all this money should go to the flood affected affectees, and especially the HIV, TB, co-infection people, and also to strengthen the response. And Alhamdulillah, we are extremely in Pakistan thankful to the expatriate, to you people, because you are always on the front end to support us, and a lot of technical support or material support we have got from our colleagues, like from APPNA, from Europe, European people, European Pakistani doctors and physicians. So that means a lot for us. And the other countries who are also supporting, although we are a little bit, we are a little bit behind up, because our Pak army people, they are on front line. So we are, infiltrating into them to reach to the masses and to the population. And once that equality comes, that whatsoever they got should be equally managed by civilian and the armed forces. So inshallah, very soon, because you are aware that the infectious rate will be very high in just a couple of weeks because of the standing water in the Sindh in certain areas of Baluchistan. So I'm extremely thankful, Dr. Fiza, and for giving me this opportunity. And my team, Dr. Umair, Dr. Saima, and the other people, we are at your disposal for such a wonderful job which you people are doing. And the academicians, we respect the academician. And whenever you come to Pakistan or we interact with you people, we will be on one page, inshallah. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Achakzai, for your honest comments and your heartfelt spirit and dedication to this HIV, and whatever you are doing, especially supervising UNDP and trying to make a difference in this very difficult war. So we really appreciate your time and efforts. And I think I'm going to invite Dr. Khudadad Khan to give us a detailed overview of the Baluchistan situation from his perspective.
So let me introduce him. Dr. Khudadad Khan is an ART physician of the HIV AIDS Treatment Center in Quetta, the capital city of Baluchistan, which was established in 2005. And he has more than 15 years of experience. This center provides ART and other HIV care services in Baluchistan. And he will be highlighting the answers to our questions and his challenges and successes in Baluchistan. Thank you very much, Dr. Khudadad Khan, for coming. Dr. KD, just one second. Before leaving, I will just request Dr. Malak Umair. Malak Saab, kindly, you are always helping in to me. So kindly collect the wisdom of this webinar, and no matter that you will put up a lot of pages and a lot of brief or things, just 1, 2, 3 recommendations. So that recommendation will be in my mind, that what the academician says about the program. So that will be transformed into action when I'm taking the agenda with the UNDP. So Malak, kindly do this for me. It's my honor, sir. Thank you. Thank you, Dr. Basira Chakzai. Thanks for joining. Thank you. KD, Assalamu alaikum. Sir. Assalamu Assalamu alaikum. Okay, Assalamu alaikum, Dr. Khudadad. Fiza, are you sharing his screen or? Yes, Assalamu alaikum. Ji, I think Dr. Fiza will share the screen. जी मैडम मैं वेट कर रहा हूँ जी स्क्रीन पे जी जी तो उदाहरण आप अपने वीडियो ऑफ कर लें थोड़ा सा आपका डिस्ट्रक्शन आ रही है ओके ओके जस्ट वीडियो ऑफ कर लें जी I think we have, mashallah, 40 participants. I'm very encouraged. Thank you. Can you all see the screen which I am sharing? No, madam, screen अभी तक No, not yet. Just a minute. I'm so sorry. I can see this screen on my end. आपने शेयर स्क्रीन पे क्लिक किया जमीन पे जो आ रही है बॉटम पे Screen share and ग्रीन बटन आ रहा होगा शेयर स्क्रीन पे उसको क्लिक कीजिएगा जिंदगी शेयर हो रही है आपकी can you see it now? जी हो जी जी यस स्लाइड शो पे लगा लें बस बिल्कुल यस जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल ठीक है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर केडी उस्मानी आई एम वेल नोन विद द नेम ऑफ विद दिस नेम डॉक्टर केडी उस्मानी तो जैसा कि डॉक्टर बसीर साहब ने कुछ चंद मिनट्स में अपनी काफ़ी चीज़ें बता दी लेकिन मेरे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर डॉक्टर बसीर साहब 15-20 मिनट बैठते क्योंकि वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और हम जो प्रेजेंटेशंस में डेटा शेयर कर रहे हैं वो उनके लिए यकीनन सरप्राइज का बायस होते और मैं चाह रहा था कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड उनके साथ शेयर करता लास्ट स्लाइड लेकिन वो क्योंकि इमरजेंसी में थे लिहाजा मैं डॉक्टर फिजा और साइमा और डॉक्टर बुशरा उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अम्बली कि वो ये जो मेरी लास्ट स्लाइड होगी इसको एनालाइज करें थैंक यू वेरी मच तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल सिनारियो जो हमने इसमें दिया है वो जस्ट एक सिंपल ओवरव्यू के लिए है कि 37.6 million people across the globe are HIV infected. This is the data of 2020. और ये मैंने जस्ट इसलिए सिलेक्ट किया था कि इसमें बच्चों की तादाद 1.7 मिलियन दी गई 1.7 ये बनती है टोटल
HIV पॉपुलेशन का 4.6%। एम आई राइट मैडम? ये इतनी ही बनेगी? हेलो 1.7 out of जी 7.6. 37.6 मिलियन में 1.7 मिलियन चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है बिलो 15 एज को लिए गया। तो ये तकरीबन जो मैंने कैलकुलेट किया है दैट इज 4.6% ऑफ द टोटल HIV पॉपुलेशन ऑफ ग्लोब। तो ये एक जाहिर है बड़ा ऑथेंटिक डेटा है यूएनएड्स की तरफ से 2021 का, ठीक है ना मैडम? इसको हमने सिर्फ ज़हन नशीन रखना है कि बच्चों की जो उन्होंने साइंटिफिक एस्टिमेट्स दिए हैं इस डेटा से वो है 4.6 मिलियन बच्चे, तो सॉरी 4.6% बच्चे हैं। तो आगे जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में अपना डेटा दूंगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इससे कैसे बाई चांस मैच कर गया। और इसमें बाकी ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले जाएंगे क्योंकि इसमें रिलेवेंस नहीं है इस प्रेजेंटेशन के हवाले से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जी। और पाकिस्तान के हवाले से जो अपडेटेड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की साइट पे जो अब डेटा है वो है टोटल पाकिस्तान के जो HIV पॉपुलेशन के एस्टीमेट हैं वो 2,40,000 के करीब हैं लेटेस्ट, जबकि मैंने मेंशन किए 2,20,000, कोई इशू नहीं है। और इसमें 53,000 के करीब दिए गए हैं जो डायग्नोस्ड केसेस हैं, और आउट ऑफ देम 32 आर रिसीविंग एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी in 51 odd centers till June 2022। ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फ्रेश डेटा है मैडम, जबकि इसमें पहले इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स को बड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया जाता था, और इस एंटी रेट्रोवायरल पेशेंट्स की लिस्ट में बहुत बड़ा परसेंटेज इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स का आता था नेशनल जब पूरा डेटा कंपाइल होता था, और वो बड़ा सरप्राइजिंगली बहुत हाई था। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नो सॉरी बैक, जेंडर यस जेंडर। तो हमने जब अपने 1700 पेशेंट्स के डेटा को हमने एनालाइज किया सिंपली इस ग्राफ्स में, तो हमें जो डेटा मिल रहा है वो 1700 पेशेंट में फर्स्ट हमने जो डेटा दिया है टीजीज का, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी का, वो है हमारे पास सिर्फ सिंस द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी टिल नाउ ओनली 18। ये एक अलार्मिंग चीज़ है, हम इसको डिस्कस बाद में कर सकते हैं। ओनली 1.09% ऑफ द टोटल HIV पॉपुलेशन ऑफ माय सेंटर। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे जो मैन 72% हमारे पेशेंट है वो एडल्ट मेल्स हैं, और उसके बाद एडल्ट फीमेल्स का नंबर आता है वो 21% ऑफ द टोटल HIV रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद चिल्ड्रन को हमने दो हिस्सों में मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड रखा है, और ये हमने पहले 12 ईयर से नीचे ये बच्चे लिए थे। तो ये जो मैं पहली स्लाइड्स का रेफरेंस दे रहा था वो था कि ग्लोबली 4.6% टोटल आबादी में जो टोटल HIV पॉजिटिव पॉपुलेशन है उसमें 4.6% बच्चे हैं। तो मेरे बाई चांस ये जो डेटा है इसका डेटा अगर आप देखें तो ये तकरीबन 4.3% हमारे 1700 में हमारे जो बच्चों की तादाद है वो 4.3 है। तकरीबन अगर इस डेटा को देखा जाए तो हम उसी रेशो के साथ आ रहे हैं हमारे, इसमें टोटल आबादी में कितने पॉपुलेशन में HIV में कितने बच्चे थे। तो ये इंडिकेटर हमें बड़ा एक सपोर्ट दे रहा है हमारे डेटा को कि हमारे चीज़ें एक उसी लेवल पे आ रही हैं और हमारा उस डेटा से बड़ा क्लोज मैच। नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट।
اور جینڈر وائز اس کے بعد جی یہ آ رہا ہے, سوری پیچھے میرے اسکرین میں وہ یوز کر رہا ہوں دوسری, اس سے پیچھے جی میرے پاس دیکھیں اس سے پیچھے والی سلائیڈ جی ہے. اسی پہ میڈم جینڈر پہ آپ آ جائیں, اس کے بعد جی جی اب اگلی سلائڈ پہ. تھینک یو یہ ہے تھینک یو. جی 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 بالکل. اب جیسے ڈاکٹر بصیر صاحب نے اپنی کچھ چیزیں بتائیں, اس میں ان کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ آپ کی پہلی جو ڈاکٹر سائمہ نے جو پہلی سلائیڈ ڈاکٹر راشد یا ارشد صاحب کی جو شو کی تھی, ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ لاس ٹو فالو, اور اس میں جو آپ کا 1 ایئر کا جو ڈیٹا تھا جس میں آلموسٹ آپ کے بہت سارے پیشنٹ لاس ٹو فالو اپ میں چلے جاتے تھے. لیکن یہ جو میں نے اپنا ڈیٹا دیا ہے, الائیو پیشنٹس میرے ٹل ڈیٹ اب بھی 82% ہمارے ٹوٹل 1700 میں الائیو اینڈ ہیلدی ہیں, اور ڈیڈ جو ایکسپائرڈ پیشنٹ ہے وہ ہمارے 17% ہے ٹوٹل ہماری رجسٹرڈ تعداد میں. تو ہمیں تو یہ ایسا ڈیٹا مل رہا ہے کہ ہمارے پیشنٹ تو تقریباً 17 ایئرس سے وہ یہی پیشنٹ ہے. 82% ہمارے living they are living a normal life, and only 17%, I mean 293 are ever deaths. تو وہ اس ایرا میں بھی تھے جب زیادہ تھے, جب اینٹی ریٹرو وائرل ہم 200 سے بیلو پہ اسٹارٹ کرتے تھے اور بڑا ویٹ کرنا پڑتا تھا. اس ٹائم ہماری لاس ٹو فالو پر ڈیتھ زیادہ ہوئی تھی. یہ اس کے باوجود 17% ہماری ڈیتھ ہوئی ہے. نیکسٹ جی. اور یہ جو ہم اس میں شو کر رہے ہیں, اور جو پہلی سلائیڈ ارشد صاحب کی, اس سے میں اپنے سینٹر کو جو کو ریلیٹ کر رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ ایور اون آرٹ ہم نے اپنے 87% جو رجسٹر پیشنٹس کو ہم نے ARVs دی ہیں, اور ان میں پیشنٹ who received ART in past 6 months, یہ وہ 64% ہے جو ان پرسن آئے ہیں کلینکل چیک اپ کے لیے, اور ان میں کچھ تعداد ہے جن کے ریلیٹیوز آئے ہیں میڈیسن سلیکٹ کرنے. تو اگر ہم ان میں اس میں مزید وہ ڈالیں گے تو وہ پرسنٹیج اور بڑھ جاتی ہے. اینڈ وی ہیو اونلی 5.7% لاس ٹو فالو اپ ریٹ. Only 95% out of 1445 patients on ART are lost to follow. تو یہ ڈیٹا ہمیں بڑا ایک انکریجنگ ڈیٹا ہے, اور یہ آن بورڈ آن گراؤنڈ اور ریکارڈ اور پیشنٹس کا جو فلو ہے وہ اس کے مطابق ہے. اس میں کوئی ایسی بالکل ڈیٹا میں کوئی ایررز نہیں ہے, یہ بالکل وہی ڈیٹا ہے جو اپڈیٹڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین the data which Dr. Arshad slide showed that there is 90% loss to follow-up case ratio in first year of life. I think he has mentioned like this. تو ہمارے ڈیٹا میں تقریباً 87% اور ہمارے تقریباً ریٹین ہیں مور دین 80%, اور اونلی 5% آر ان لاس ٹو فالو لسٹ. نیکسٹ سلائڈ. جی یہ HIV ایکسپوجر کے حوالے سے میڈم ہم آپ کو اس میں یہ شیئر کر رہے ہیں. شاید سلائیڈ میں یہ جو فرسٹ 10.26 169 پیشنٹس لکھے گئے ہیں, یہ بلڈ بورن ہے, بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس. اس میں تھیلیسیمیا والے بچوں کو بھی ہم نے شامل کیا ہے اس 10% میں, اور جن کو ہول بلڈ جو لگی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن, اور وہ انفارچونیٹلی HIV پازیٹیو پیشنٹس نے ریسیپینٹ کو دی ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے.
اور اس کے بعد جو 11.48 ہے 189 جو کا فگر ہے وہ انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز کا ہے، اور انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز کے بعد 55 جو پازیٹیو کیسز ہیں جو 3.34% پڑتے ہیں، یہ ورٹیکل ٹرانسمیشن ہے فرام مدر ٹو چائلڈ. اور جو سب سے بڑا کالم آپ کو ملے گا 59%، یہ سیکشول ٹرانسمیشن سے یہ اتنے پیشنٹ ہیں 59 راؤنڈ اباؤٹ 60%. اور اس کے بعد ان نون جو ہم نے شو کیے ہیں وہ 15% ہے 254. دیئر اسٹیٹس واز ان نون اور مے بی دیئر ور ان ڈینائل. اور اس بلک میں 15% میں more than 10%, بلکہ almost all patients who were counseled and they were in denial and they showed unknown status of their HIV transmission. لیکن وہ ہمیں strong suspicion ہے کہ وہ اسی sexual route والے cases ہیں. اگر ہم ان others کو یہ جو sexual transmission والے اس میں ڈالیں تو یہ تقریباً ہمارا 65-70% کی یہ چلا جاتا ہے. تو ہمارا بڑا ایک بہت ہی کلیئر فگر ہے کہ سیکشل روٹ از اسٹل مور امپورٹنٹ ان دا ٹرانسمیشن آف HIV, which is 59 or 60%. Or if we add others, I mean denial and unknown, which will be, I think, 70%, near about 70%. سیکشول روٹ اب بھی بہت زیادہ پرومیننٹ ہے اس میں، irrespective آف کہ ہم ان کو کس کیٹیگری میں ڈالیں، ولنریبل میں یا رسکی گروپس میں یا کسی اور میں، یا جب ہم انہیں مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے. لیکن اوور آل وہ ٹرانسمیشن سیکشولی ہے جو تقریباً چلی جاتی ہے 70%. نیکسٹ. Previous payment. I think Fiza, the previous one, yeah. ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا اس پہ کلیئر ہے میں لکھا ہوا نہیں ہے تو فرسٹ ون جیسے پچھلی سلائڈ پہ بیک اس پہ یہ میں پچھلے والی سلائڈ یہ ہے میرے پاس. آپ آگے جی آپ آگے جی پچھلی سلائڈ جس پہ میں وہ شو کر رہا تھا ایکسپوجر. جی یہی. ہاں اس میں اب میں صرف ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 10% ہمارے کیسز ہیں یہ بلڈ اینڈ ٹو بلڈ پروڈکٹس، 189 انجیکٹنگ ڈرگ یوزر سیم infected needle, 55 cases which is 3.3%, they are vertical transmission cases, 979 which are 60, near about 60%, they are sexual route. Mode of transmission is sexual, through sexual route. Or 15% were put on in unknown or denial. تو ہم یہ لاسٹ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم دونوں کو مرج کریں تو یہ جا کے مور دین 70% پہ یہ جا کر کے. تو نیکسٹ سلائڈ پہ اب جاتے. جی اس میں ہم نے آکوپیشن وائز یہ وہ کی ہے جس میں ہمارے پاس سب سے زیادہ جو انڈر رپورٹڈ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں سب سے جو ہم نے شروع میں فگر دیا ہے ڈرائیورز کا. ڈرائیورز ہم نے اس لیے نہیں کہ ویسے لانگ ڈسٹینس ٹرک ڈرائیور عموماً یہ ٹرم یوز ہوتی تھی پاسٹ میں. ہم نے یہاں پہ اس لیے ڈرائیورز شو کیا کہ اب یہ جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے اس میں ڈرائیورز کے علاوہ اور الائڈ ان کے جو پیشے ہیں ان کے یہ ورکرز بھی شامل ہیں، اور رکشا ڈرائیورز اور یہ سوزوکی ڈرائیورز، 2D ڈرائیورز، بس ڈرائیورز اور یہ ٹرکر، یہ سب کو ہم نے collectively drivers میں ڈالا ہے. And they have a unique risky sexual behavior. They share
these teachers in common. तो ड्राइवर्स या ट्रकर्स हम कहें तो ये 17% है टोटल 1700 में हमारी रजिस्ट्रेशन का, वो बन रहा है 295 केस। उसके बाद हाउस वाइफ्स हैं जो 17% हैं, 285 ऐसी विमेन हैं जो उनके जिनके स्पाउस पॉजिटिव थे और वो उनकी वजह से पॉजिटिव। और अनएम्प्लॉयड हमारे 12% ऐसे पेशेंट हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, 213 ने ये रिपोर्ट किया कि दे आर अनएम्प्लॉयड। शॉपकीपर्स हमारे 5% के करीब पेशेंट्स शॉपकीपर्स हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स तकरीबन 4.5, जिनमें आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज भी जो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं, उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया। और अब्रॉड वर्कर्स, सरप्राइजिंगली अब्रॉड वर्कर्स जब सेंटर शुरू हुआ था तो जस्ट जो भी रजिस्ट्रेशन हमें मिली थी वो दुबई डिपोर्टीज और ये मस्कत वगैरह से डिपोर्टीज रिपोर्ट हुए और वो रजिस्टर हुए थे। उसके बाद उनका फ्लो बहुत कम हुआ है अब्रॉड वर्कर्स का, और ये टोटल फिगर हमारे टोटल ये रजिस्टर्ड केसेस में 2.3% है, और आगे 40% के करीब मुख्तलिफ और कैटेगरीज में। तो इसमें जो प्रोमिनेंट है वो ये ड्राइवर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, और शॉपकीपर को हमने एक और कैटेगरी के साथ भी जोड़ना चाहे जो अदर्स में है, वो है हमारे ये होटल के स्मॉल होटल्स के वर्कर्स। ये एक बलूचिस्तान का यूनिक एक वनरेबल और इसकी पॉपुलेशन है जिसमें ये डे बाय डे नंबर ऑफ रिपोर्टिंग हमारी ज़्यादा हो रही है। ये बड़े शहरों में जो छोटे होटल्स हैं, मुख्तलिफ छोटे रोड्स में, मोहल्लों में, ये जिसको हम आम में ये चैन की होटल्स वगैरह, जहाँ ये ब्रेकफास्ट और चैन की चाय वगैरह मिलती है, और ये ज़्यादातर हमारे पश्तून बेल्ट के हैं। अगर हम अदर्स में से वो निकालें तो ये शॉपकीपर्स में ये तादाद भी कोई 10% के करीब हमारी बनती है। और ये बड़ा एक यूनिक डायनामिक्स है हमारे बलूचिस्तान के HIV प्रेवलेंस की, कि ये जो हमारे अब्रॉड वर्कर्स कम हो गए हैं, लेकिन ये बड़े शहरों में पाकिस्तान के मोस्टली हमारे बलूचिस्तान के ये अनएम्प्लॉयड लोग जो अपना प्राइवेट कारोबार करते हैं, वो ये चैन की होटल और ये तंदूर वगैरह चलाते हैं। इनमें ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है HIV, ड्राइवर्स के साथ साथ इनमें भी। नेक्स्ट स्लाइड। जी, इसके बाद ये हमने एक छोटा सा डेटा इसमें शामिल किया है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ HIV पॉजिटिव केसेस, हमारी ये सेंटर का ये वो है, जब भी रजिस्टर हम पेशेंट करते हैं HCV को हम और HBV को हम ज़रूर स्क्रीनिंग के लिए ये कंसिडर करते हैं, और तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स who becomes registered are always being checked for HCV and HBV। तो इसमें जो 96% हमारे HCV नेगेटिव पॉपुलेशन है और 3.15% HCV पॉजिटिव है हमारे HIV पेशेंट। तो हमारी जो प्रिवलेंस है HCV की वो 3% के करीब है। नेक्स्ट। और सेम इसी तरह जब हम HBV हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को देखते हैं तो वो भी बहुत कम पेशेंट्स हमें पॉजिटिव मिले हैं, ओनली 1%, 17 पेशेंट्स के करीब, और 98% हमारे पेशेंट्स HBV नेगेटिव। नेक्स्ट। यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंडिकेटर है और बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा ज़रूरी जो स्क्रीनिंग है हमारी, जो इनिशियल वर्कअप में, वो TB स्टेटस को कंफर्म करना है एक्टिव TB के लिए। तो हमारे जितने भी पेशेंट न्यूली रजिस्टर्ड डे फर्स्ट, हम उनका अगर पल्मोनरी सिम्टम्स हैं तो स्पूटम जीन एक्सपर्ट या अकॉर्डिंगली जिस भी स्पेशलिटी का केस हो, जिस भी
एक्स्ट्रा पल्मोनरी जिस टाइप का टीबी सस्पेक्ट हो वो हम रेफरल करके उनको टीबी कंफर्म करते हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट रजिस्टर्ड में डेटा है उनमें हमारे टोटल पेशेंट्स में 6.68% टीबी पॉजिटिव केसेस निकले हैं। तो हमारे पेशेंट्स में टीबी की प्रिवेलेंस 6.6 है और 93% पेशेंट्स हमारे टीबी नेगेटिव निकले और उनको तमाम को हमने जो एज पर प्रोटोकॉल्स टीबी थेरेपी दी है और उनमें मोस्टली टीबी हमारे पेशेंट्स में टीबी कोर्स कंप्लीट किया है और कोई इस तरह के बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं दी। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी को हमने इसमें अलग नहीं रखा, लेकिन एक स्लाइड में टोटल टीबी को जस्ट शो किया। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। ये चूँकि बलूचिस्तान में इसकी प्रेवलेंस को जब हम देखते हैं और हमारे HIV के रजिस्ट्रेशन को हम देखते हैं तो हमारे लिए ये डायनेमिक्स जो रेफरल की और अपने HIV ट्रीटमेंट सेंटर में से वो एक्सेस करने की जो डायनेमिक्स हैं वो बड़ी एक वाजे हैं और उसके पीछे बड़ा रैशनल है कि क्वेटा में 48% तकरीबन हमारे टोटल पेशेंट्स का आधा क्वेटा से ताल्लुक़ रखता है। तो ये साइंटिफिकली भी बड़ी वजह है कि जो नियरेस्ट लोग हैं वो बड़े इजीली अप्रोच करते हैं और जो इससे जस्ट एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है पशीन वो 7% उनकी पॉपुलेशन में उनका हिस्सा है। साथ में किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 5.9% तकरीबन 6% पेशेंट हमारे उस डिस्ट्रिक्ट में हैं। इसके बाद थोड़ा लोरलाई उससे पीछे चला जाता है, वो 3.4% है और किला अब्दुल्ला भी इतने ही फासले पे है, वो भी 3.3% है। नोश की ये ईरान बॉर्डर की तरफ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट और जो रूट जाता है वहाँ से पेशेंट हमारे 2.9 तकरीबन 3% है और बाकी 28% जो बाकी 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे उनका ताल्लुक है। उनमें भी जो सबसे हाईली प्रिवेलेंट है वो शिरानी और योग जो हमें KPK और उस तरफ पंजाब को टच करता है, डेर इस्माइल खान को। तो ये हमारे फिगर्स बड़े ये इस बात के को हम बड़ा इससे सीरियसली वो करेंगे कि अगर एक सेंटर एक जगह हो तो वहाँ बड़े इजीली पेशेंट रेफर होके आते हैं और वो उनकी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होगी। जो फासले ज़्यादा होते जाएंगे हमारे यहाँ कम्युनिकेशन रोड और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ट्रैवलिंग नहीं हो सकती। कई एरियाज तो ऐसे हैं जो आपके कैपिटल क्वेटा से टोटली कटे हुए हैं, तो उनको जब हम देखते हैं तो जितना हम दूर फार फ्लंग एरियाज की तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उतनी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कम है। जैसे डॉक्टर बशीर साहब ने कहा कि बिल्कुल ये बहुत एक सीरियस इशू है कि हमें इन 17 सालों में हमें बलूचिस्तान में मज़ीद सेंटर, सिर्फ सेंटर्स नहीं, डॉक्यूमेंट में नहीं, प्रैक्टिकली सेंटर्स बनाने चाहिए ताकि इन पेशेंट्स को वहीं सर्विसेज मिले। एक्सेप्ट तुर्बत सेंटर है जो कोस्टल एरिया के को और ये हमारे मकरान बेल्ट को कवर करता है। इन 1700 पेशेंट्स में अगर हम उनकी तादाद रजिस्ट्रेशन की ऐड करें तो ये हमारे 350 उनके पेशेंट हैं। ये टोटल बलूचिस्तान के 2050 पेशेंट बनते। और अगर डॉक्टर बुशरा साहिबा हैं फोरम में और सुन रही हैं तो मैं जस्ट उनसे रिक्वेस्ट करूंगा या डॉक्टर साइमा प्राचा से, जो मैं आज मुझे वो फिगर नहीं मिल सका, जो टोटल एस्टीमेट था 2,40,000 का यूएनएड्स का एस्टीमेट। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ अगर कोई पार्टिसिपेंट जानता हो कि बलूचिस्तान की टोटल एस्टीमेट्स क्या हैं। मुझे लगता है कुछ 6 या 7 हज़ार के करीब पहले पास्ट में, अब कितनी है। तो अगर हमारा ये फिगर उसके साथ जब ये कंपेयर होगा तो 2050 पेशेंट हमारे एवर रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें उस कैटेगरी में आते हैं जो हम कह सकते हैं कि दोज हु नो देयर HIV स्टेटस एंड दे आर
registered in treatment centers and they are getting treatment. تو اگر ہم estimate کی بات کریں تو اگر بلوچستان کا estimate اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری HIV پاپولیشن کی کوریج یا ایکسیس ٹو ARV سینٹر کتنی ہے وہ ہم دیکھنا چاہیں گے. نیکسٹ. جی لاسٹ میں یہ میں نے اپنے کیس مینیجر کو میرے پاس ایک کیس مینیجر ہے اور وہ سارا ڈیٹا کمپائل کرتا ہے اور MIS میں یہ ریکارڈ جاتا ہے اسلام آباد MSCP گلوبل فنڈ, اور اس میں کوئی ایسے ایررز ہمیں یا فیڈ بیک میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے کہ ان ڈیٹاز میں کوئی مسئلہ ہے یا ان اتھینٹک ہے ان ویلیڈیٹڈ ہے. اس پہ کبھی کوئری کوئی نہیں آئی. اور جہاں تک وائرل اسپریشن, اگین میں اسی سلائڈ کی طرف ریفر کروں گا, پہلی سلائڈ جو ڈاکٹر سائمہ نے شیئر کی ڈاکٹر ارشد صاحب کی, اور جو ڈاکٹر بشرا صاحبہ بھی جانتی ہیں, جو اکثر وہ ظاہر ہے نیشنل لیول کا ڈیٹا ہے, اتھینٹک ہے کہ لاسٹ ٹو فالو بہت زیادہ ہے اور ود ان 1 ایئر تو بہت ہی زیادہ ہے, اور وائرل اسپریشن بھی مایوس کن ہے. تو میں نے لاسٹ 6 منتھ کا وائرل لوڈ ریزلٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, اور جو اتھینٹک ہے آغا خان لیب سے ہمیں ملتا ہے اور بڑی بہتر رپورٹنگ ہو رہی ہے. اور اس میں بھی اگر تھوڑے سے پرابلم ڈیلیڈ رپورٹنگ کے نہ آتے تو ہمارے وائرل لوڈ کی یوٹیلائزیشن اور بڑھتی. تو ہم نے یہ فگر دیا ہے وائرلی سپریسڈ 629 patients are virally suppressed, or only 5% were found virally unsuppressed. اور unsuppressed کو ہم نے لیا ہے more than 1000 سے above copies کو ہم unsuppressed لیبل کر رہے ہیں. اور اب شاید وہ اور زیادہ وہ کٹ آف نیچے آ گیا ہو, تو ہم نے وہ 1000 کو کٹ آف کیا ہے. جو وہ جن پیشنٹس کی رپورٹ 1000 کاپی سے ابو ہے ہم نے ان کو وائرلی سپریس میں ڈال دیا. وہ 5% کے قریب 5.5, اور 94% ہمارے جو پیشنٹس ARVs کے ہیں, بچے بھی اور رسکی گروپس کے بھی اور میل فیمیل سب, اور ان کی رپورٹیں پڑی ہیں تو وہ شو کر رہی ہیں کہ 94% ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ وائرلی انڈیٹیکٹڈ یا بیلو 1000 copies. نیکسٹ. جی یہ میڈم اس پہ میں سب کی اٹینشن چاہوں گا, اور ڈاکٹر بصیر صاحب کو میں 1 منٹ انگیج کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے کرنٹ یونیورسل کوریج انڈیکس 2021 پریلیمنری, مگر یہ ڈیٹا ہم نے کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کسی لیکچر میں یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج جو پاکستان میں یہ نیا کنسیپٹ اور اس میں یہ انشورنس ہیلتھ کارڈ وغیرہ کے سلسلے میں, تو یہ جب انہوں نے پورے نیشنل ڈیٹا لیے ہیں تو اس میں انہوں نے 2021 میں یہ فریش کمپائل کیے کرنٹ یونیورسل ہیلتھ کوریج انڈیکس تمام پروونسز کا along with گلگت بلتستان, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اینڈ آزاد جموں کشمیر. تو اس میں انڈیکیٹرز جو لیے گئے ہیں یہ نمبر 1 فیملی پلاننگ, نمبر 2 اینٹی-نیٹل کیئر, چائلڈ امیونائزیشن, کیئر سیکنگ بیہیویئر آف چائلڈ فار چائلڈ نمونیا, ٹیوبرکلوسز, HIV, انسیکٹیسائڈ. تو یہ پوری لسٹ نیچے جا رہی ہے, میں اس کو زیادہ وہ نہیں کروں گا, ٹائم نہیں ہے. تو اس میں بیٹا میں صرف اپنے اس کو پروونس کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں, اور کوئی بھی یہ سلائیڈ بعد میں دیکھ سکتا ہے. اور یہ بڑے اتھینٹک نیشنل ڈیٹا ہیں, اور اس میں ہمارے فیڈرل ہیلتھ ایڈوائزرز کا بڑا رول ہوگا سائنٹیفکلی یہ ڈیٹا کمپائل کروانے میں, اور وہ جتنی بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج دیا. اس میں اگر آپ بلوچستان کا ڈیٹا دیکھیں تو ہم گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر جو اوروں کے نسبت پروونسز کی
انڈر پریولیج یا اس طرح کے میں ٹرم نان ٹیکنیکل ہے لیکن کہہ سکتا ہوں کہ وہ اور صوبوں سے زیادہ انڈر پریولیج ہیں، لیکن تب بھی تمام انڈیکیٹرز میں بلوچستان سب سے نیچے ہے. سپوز ہم اوپر فیملی پلاننگ لیتے ہیں، پنجاب 50% اس کو کوریج دے رہا ہے، سندھ 50% دے رہا ہے، کے پی 50% دے رہا ہے، بلوچستان صرف 33% ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری 55، گلگت بلتستان 46، آزاد جموں کشمیر 51، اور یہ تمام انڈیکیٹرز بلوچستان کے نیچے آ رہے ہیں. جبکہ آپ صرف اب فوکس کریں ایچ آئی وی ٹریٹمنٹ کے پرسنٹ پہ. ایچ آئی وی ٹریٹمنٹ میں سرپرائزنگلی پنجاب صرف 12% یو ایچ سی انڈیکس میں ہے، 12% ایچ آئی وی کوریج میں. سندھ اس سے زیادہ نیچے 9.4% پاپولیشن. اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹیمیٹ ہر صوبے کو پتہ ہونے چاہیے کہ ان میں کتنے ان کے یہ ان ڈائگنوز انسٹریٹ کیسز ہیں ایچ آئی وی کے، اور کتنے ان کے ایچ آئی وی پازیٹیو اسٹیٹس کو جانتے ہیں. تو یہ انڈیکس شاید اسی کو انڈیکیٹرز کو دیکھ کے بنایا گیا. اور کے پی کے 19.8 سب سے ٹاپ پہ جو ایچ آئی وی ٹریٹمنٹ کا انڈیکس ہے 19.8 کے پی کا ہے. اور ویری نیکسٹ بلوچستان کا 15.7، اسلام آباد کا 12، جی بی کا 12، اور آزاد جموں کشمیر کا 12. تو یہ آپ کا نیشنل انڈیکیٹرز میں واحد انڈیکیٹر ہے بلوچستان کا جس میں ہم ٹاپ پہ ایچ آئی وی ٹریٹمنٹ کی کے جو ایکسیس. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں انہوں نے پیرامیٹرز کیا لیے ہیں، کیا انڈیکیٹرز دیکھے ہیں، لیکن جو میں نے سلائیڈ دکھائی ہے وہ ٹوٹل 95% بلوچستان کے ایچ آئی وی پاپولیشن کو ریپرزینٹ کری ڈیٹا کو. اور اس میں اگر تربت کا ڈیٹا دیں تو وہ مکس کر کے تو وہ ہمارے یہ تھوڑے سے ڈیٹا ڈسٹرب ہوتے ہیں. ادروائز یہ شاید ہم کے پی کے نزدیک 19-20% انڈیکس میں ہوں. تو سب سے ایک سپورٹنگ یہ ایویڈنس یہی ہے کہ بلوچستان ایچ آئی وی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور صوبوں سے ٹاپ پہ ہے. اونلی کے پی از 3% ابو دین اس. اور وہ بھی ہم اگر اپنے ایک سینٹر کو تھوڑا امپروو کریں تو ہم تقریباً کے پی کے برابر ہیں. اور کوئی بھی اگر یہ ایتھنٹسٹی نہیں ہے تو ان پوائنٹس کو اس ڈیٹا کو چیلنج کرنا چاہیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا یہ انڈیکس بہت نیچے ہے. جبکہ میں اپنے جو یہ ڈیٹا بتا رہا ہوں اور میں اس ڈیٹا سے مطمئن ہوں، خوش ہوں، اور ہماری کوریج موسٹلی سب انڈیکیٹرز ہمارے 80% سے ابو ہیں، کچھ 90% میں. اور پیشنٹس کا جو الائیو اسٹیٹس ہے وہ بھی آپ کو شو کر رہا ہے کہ دیر از نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ. مگر جو ایشوز میں نے آپ کو کچھ ہائی لائٹ کرنے ہیں وہ کچھ اور نوعیت کے ہیں. پرابلم بڑھا کے نہیں بتانے چاہیے. اور میں اپنے سینٹر کے سٹاف کی صرف بات کروں گا کہ 2005 سے ایک ڈاکٹر اور ایک سٹاف تھی. جسٹ ایک ڈاکٹر کا اضافہ ہوا اور ایک سٹاف کا گلوبل فنڈ کی طرف سے اضافہ ہوا. انیشیل 100 پیشنٹ اور اب 1700 پیشنٹ سیم ٹیم مینیج کر رہی ہے. تو ہم پینل سے یہ کویشچن کریں گے کہ ورلڈ میں یا ورلڈ کو اگر ہم نہ لیں تو ریسورس پور کنٹریز میں ایک ایچ آئی وی سیٹ اپ کتنے رجسٹرڈ پیشنٹ کو کتنے اسٹاف ممبرس کے ساتھ ایکسیلنٹلی کیٹر کیا جا سکتا ہے. تو ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ڈاکٹرز چاہیے، ہمیں اچھے کاؤنسلرز مزید چاہیے، اور یہ ریفریشر کورسز کاؤنسلنگ کے حوالے سے ٹیکنیکل یہ جو ہمارے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں CD4 ہو رہا ہے اور مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور پیشنٹس کی جو ڈاکٹر کلینکل سائٹ پہ جو بلکی قسم کی او پی ڈیز 30 40 50 پر ڈے او پی ڈیز ہو رہی ہیں اور بڑا لینتھی پروسیس ہے. تو ان ایشوز کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور اس میں جو یہ ڈیٹا ہم دے رہے ہیں
अक्सर ये पिछली एक रिपोर्ट थी, कोई इंग्लैंड से एक डॉक्टर ने किसी जर्नल में प्रिंट कराई है, सब ने तकरीबन वो रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और स्टिग्मा की भी मिथ बस्टिंग कर दी है और बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें ज़रा देखनी चाहिए कि हमारी डेटा एग्जेजरेटेड तो नहीं है। हमने पास्ट में जितनी IBDS किए हैं वो हमने किस जहन से किए हैं, और हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उन्हीं फिगर्स के थ्रू बनाई हैं, और उसके पीछे हमारे मोटिव्स क्या थे। मैंने अपने सेंटर पे आंख बंद करके जो काम शुरू किया है और जो हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने अब तक कर रहे हैं, और ये डेटा उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और तुर्बत सेंटर मेरा क्यों फंक्शनिंग नहीं है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में है, डेडिकेटेड स्टाफ एंड कमिटेड स्टाफ विद ऑनेस्ट अप्रोच। हमारे स्टाफ में किसी की प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है। 17 ईयर्स से हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और हमने जितने रिसोर्सेज हमें दिए जा रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा एक पेनी भी शामिल नहीं है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंसेंटिव्स और ये सैलरीज। जस्ट हमें एंटीरिट्रोवायरल जो पेशेंट के लिए बैकबोन है ट्रीटमेंट की, वो हमें अनइंटरप्टेड सप्लाई हो रही, कोई इंटरप्शन नहीं है। जैसे क्वेश्चनियर में भी था, CD4 एक एसेंशियल टूल है, वो भी हमें अनइंटरप्टेड मिल रहा है। थैंक यू जो भी दो डोनर सपोर्टर दे रहा है। वायरल लोड भी अब तक जो ये आगा खान के थ्रू जो एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा है, दैट इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी स्टैंडर्डाइज्ड। पहले हमारे पास अपनी ये वायरल लोड मशीन होती थी, जिसको हमने चैलेंज किया उसके रिजल्ट को, और वो मशीन वाकई करेक्ट रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, और वो पड़ी हुई है अभी। तो हमें ये आगा खान से प्रोजेक्ट के थ्रू जो सपोर्ट मिल रही है, बहुत अच्छी सपोर्ट है। सिर्फ ये है कि सेंटर्स अगर बनाने हैं तो उनमें कमिटेड डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए। अगर आप 50 सेंटर्स पे पहुंचे हैं, मज़ीद बनाना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं है, और हमारा डेटा वो है जो पहली स्लाइड्स में मैं देख रहा हूँ, तो सॉरी टू से ये हर जगह डिसअपॉइंटमेंट होगी। पेशेंट रजिस्टर होंगे, वेरी नेक्स्ट मंथ या वेरी नेक्स्ट ईयर वही होगा कि 10% रिटेन नहीं होंगे। जबकि मेरे 2 काउंसलर्स हैं, डेडिकेटेड हैं, यंग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और पिछले 10 सालों से अनइंटरप्टेड वो सर्विसेज दे रहे हैं, और दे आर कंटिन्यूसली डिमांडिंग मी टू अप्रोच टू authorities, political authorities and bureaucratic authorities for their job indulgence in government sector, ताकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में आए, इसी सेंटर में परफॉर्म करें, और ये भी उनका पैशन बन गया है। 17 साल से हमने काम किया है, वो भी 10 साल से काम कर रहे हैं, और बेस्ट काउंसलर, बेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर हमारे ये हैं, और हमारी स्टाफ डेडिकेटेड है, और वो अब 19 ग्रेड तक पहुंच चुकी है। मैं 20 ग्रेड में जा रहा हूँ, और हम अब तक वो एक ही माहौल में काम कर रहे हैं। और हमारे डेटा को अगर किसी ने मज़ीद वैलिडेट करना है, साइंटिफिकली एनालाइज करना है, तो वेलकम। और सजेशन मेरी यही है कि ज़्यादा सेंटर्स बनाएं तो उन क्वालिटी को पे कंप्रोमाइज़ न करें। डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए, और उनकी सैलरीज होनी चाहिए, उनके इंसेंटिव्स होने चाहिए, ताकि मज़ीद डॉक्टर्स, मज़ीद स्टाफ इनकरेज हो और वो इस फील्ड में आए, और ये फील्ड सिर्फ डेडिकेशन मांगती है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Usmani. Mashallah, and Jazakallah for all your efforts. And we are very painfully aware that dedication, commitment, and honesty is the key ingredient. If anything, मैडम मैं एक सिर्फ बात भूल गया। मेरी आवाज आ रही? जी जी, हेलो जी। वो एक चीज जो आजकल बड़ा एक बर्निंग इशू है, फ्लड्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ ARV कंटिन्यूएशन। तो इंटरप्शन ARVs की शायद और प्रोविंसेस में हो, लेकिन मेरे मैनेजर ने
जो मुझे रिपोर्ट किया है, only one patient from DM Jamali has reported that he is उसको ARVs की शॉर्टेज हो रही है, विद इन अ वीक ARVs खत्म होंगी, तो उनको हमने ARVs भिजवा दी, ओनली वन पर्सन। और एक पेशेंट ने रिपोर्ट किया और उसके रिलेटिव्स में से भी HIV पेशेंट थे और वो खा रहे थे, उन्होंने आपस में मेडिसिन शेयर किया। तो none of other patients have reported about this issue, और तकरीबन तमाम पेशेंट एक्सेस में हैं और उनको कहा गया है कि अगर कोई इशू है तो हमें बताएं इंटरव्यू पर। तो आप इस पे वो करें कि हो सकता है ये ARVs इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्लड हम बड़ा वो इशू बन जाता है, लेकिन इस प्रोविंस में मैं बिल्कुल, अगर किसी को पेशेंट को इशू था वो हमें रिपोर्ट करेगा, अदरवाइज हमारा वो MIS सिस्टम, अगर वो पेशेंट नहीं आ सकता या उसकी ARVs आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं तो वहाँ पे रेड ब्लिंक आता है और हम उसको चेक कर लेते हैं थ्रू आवर मैनेजर। तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है फ्लड्स के दौरान। तो ओके, थैंक यू डॉक्टर उस्मानी। बाज़ एग्जेजरेट हो जाती हैं बाज़, जी क्योंकि जी फ्लड्स हैं, अक्सर आप जब कहीं सपोर्ट देने जाते हैं तो जिनको सपोर्ट नहीं भी चाहिए होती वो कहते हैं जी हमें सब कुछ चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं कि हम उनको एग्जेजरेट करके बताते हैं, हम उनको एक बहुत प्रॉब्लम शो करके बताते हैं, अदरवाइज ये होता नहीं है इतना। चलिए, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, बट डॉक्टर खुदादा खान, excellent, and thank you very much. Please stay on because we will have questions. Okay, my next speaker is Dr. Umair Malik, and he is an extremely resourceful and very well-connected HIV treatment specialist who has been working in the NACP for several years, and he is actively a member of the APPNA-MERIT HIV Committee as well, and has been instrumental in creating the Pakistan Public Health Forum as well, and bringing public health issues to the surface. And he has been very active in HIV awareness campaigns. And being a treatment specialist, I think he coordinates with all the provinces. So his participation here was very crucial to our discussion. So Dr. Umair, please, thank you so much for waiting as well, and please go ahead. Saima, we are running way behind, so just like we had to do it quickly. So please keep an eye on the time. Yeah, thank you very much. I will try to be very brief, and I will not repeat anything which Dr. Usmani or Dr. Basir have said. Thank you very much. As usual, I want to start my session with the verse from Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरा काम मुझ पे आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा को भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें. I want to go forward, but I want to acknowledge the APPNA team for a wonderful last 1 year. I think it's more than a 1 year, especially Dr. Fiza, Dr. Saima, Dr. Bushra for their leadership and giving me the opportunity to be the part of this very, very passionate team. I am the part of HIV since 1994, but this current combination is really working, mashallah. And I dedicate my to all the people living with HIV and to my all ART staff in the country, especially Dr. Usmani for his providing leadership and the data suggesting that is much Dr. Umair, your voice is breaking up. Unlikely in other indicators. Thank you, Dr. Usmani. Both are डॉक्टर उमैर, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप थोड़ा सा ठीक वाईफाई के एरिया में जाएंगे. 6 more processes, and I would suggest next time to involve the Dr. Umair, are you online?
डॉक्टर मैंने अपनी वीडियो आप ऑफ रखें, मे बी कनेक्शन स्लो है तो वो आई थिंक आप अनम्यूट कर लें, अपना अनम्यूट कर लें, स्लाइड्स आप वीडियो ऑफ कर लें। अच्छा चले, राइट, आप स्लाइड शेयर कर लीजिए काइंडली। ठीक है, दोबारा शेयर करूं स्लाइड? जी जी दोबारा शेयर करें, वो आपको कनेक्शन में कोई इशू आ रहा है तो आप वीडियो ऑफ रखेंगे तो जरा वरना मैं मोबाइल पे चले। आई थिंक नो इट विल वर्क। आवाज आ रही है? यस चले, थैंक यू। I will try to cover in the remaining time. Baluchistan mein, what Dr. Usmani has said, there are 2 centers, but 6 more in process. I will suggest to next session to involve the provisional AIDS control program. We have a wonderful team, especially Dr. Daud, who is sitting in as a deputy program manager from last 8 years with us. Services, Dr. Usmani has already said. Just to repeat, through the support of Global Fund, national program is providing rapid kit, CD4 and viral load through Aga Khan. But the question is, we have a brand new 0-meter viral load PCR machine sitting in the PACP, which is not utilized. These are the questions. We are providing Gene Expert through the National TB program. We are providing the TB treatment, curative TB treatment, prophylaxis, Hep B, Hep C treatment. The government of the Baluchistan through the hospitals is providing OIs and STIs management. I am proudly as a treatment specialist that there's no stock out reported of any major drug or kits since last decade. There is a good cohesion between the Nai Zindagi COPC sites of Turbat and the Quetta, but currently there is no CBO working in Baluchistan, which is alarming. We have already repeated that. I just want to highlight this. This is the last IPBS survey where you can see that we have Quetta, where PW IDs are 8.3%, and we have TGs, which is 3.2%. And I'm amazed that only 18 TGs are registered since last 17 years. So the data is suggesting that we have a high load. This is the prevalence survey, but it is not transmitted to the treatment services. So there's a gap. These again. मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं वरना मोबाइल पे सर्च कर दूंगा। ये लास्ट सर्वेज हैं, अगर नेशनल सर्वेज हैं, बट द नेशनल सर्वे इज शोइंग दैट currently it is the PWIDs which is leading the response, but the other 3 key positions are also emerging as a threat. And Pakistan and Baluchistan both are following the typical Asian epidemic model. You can see that it starts with IDUs, and then it's in the general population, through the bridging population, the spouses of IDUs, and the sex workers through their partners. So we have last opportunity right now to respond to this disease, this epidemic. Otherwise, it's in the general population. It is a very expensive disease to work with. These are the modelings where you can see that डॉक्टर मैं आपका कनेक्शन बहुत खराब है, आवाज बहुत टूट के आ रही है। was leading. आवाज आ रही मोबाइल पे? जस्ट अ मिनट, अगर मुझे मोबाइल अलाउ करे। स्विच कर लें, बिल्कुल अगर स्विच कर सकते हैं तो अच्छा। ये आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मैं इसको फिर म्यूट कर लूं। So you can see this slide. Currently, it is the IDUs which are the main drivers. We can't hear you. MSM. And these are the Baluchistan, which are hidden in the population. This is again the cascade
which is a bit old, but the percentage, this is estimated numbers. This is for national. 20% is the coverage, which are linked to treatment centers, and only 10% are on ARTs, adherent population. So that you can see the difference is almost 80% of the coverage. So we are far behind in terms of 1990 595. This is a comparison first IBBS in the country, and the last was in 2016. You can see these, the ITUs is gray, the FSW is green, the red is heterosex transgender, and this is MSM. You can see how epidemic is growing in the country. We were here in 2005, and last in 2016, 7 years back, and I'm afraid that next, because this year we are going in next round of IBBS, the map will be much different. This is the current, you can see that treatment centers coverage. We have only 2, and you can see the location that Baluchistan is a huge province. If I can show you, this is Baluchistan. And we have only 2 treatment centers, one in Turbat and one in Quetta. In the whole, the coverage is very poor in Baluchistan in terms of services, because the patient living here or here cannot visit Quetta or Turbat every month. There's a huge cost implications. This is the CBO's coverage, and there is no CBO in Baluchistan. The whole Baluchistan is uncovered with any prevention services for transgenders, for male or female sex workers. This is food for thought for a province and Global Fund and UNDP. Again, this is Baluchistan. I just want to show this, our dashboard of national MIS, that every center like Baluchistan, Quetta and Turbat, this MIS is visible. That today we have disappointment, these were missed yesterday, and these are not coming to centers from last 90 days, lost to follow, and these patients need to be sent for viral load. So every tablet, every lab test is captured on a live database of national program. So I'm very proud to be the part of this national MIS. And there is no hanky-panky, any sort of, anybody can check it lively our drugs consumption or diagnostics consumption. And it is reporting on male, total male, female, transgenders and the child and female. So it's very, very sensitive, and it's catering all our needs and reporting needs to the Global Fund. So I'm over, and if there are any questions, I have 2 questions for Dr. KD. Can I ask? Yes, I have also 1 or 2 questions for you, Dr. Umar. I am a very big critic of you, these slides. Okay. Hold on, gentlemen. Let's take a comment from our next panelist, Dr. Bushra. Yeah, let's take some comments from Dr. Bushra, and then we will open to the questions. Then Dr. Malik and Dr. KD can ask from each other. Yes. So Bushra, okay. yeah. Okay. Assalamu alaikum, Bushra. Yeah. So Bushra. Assalamu alaikum. Yeah, I don't think I need to introduce you, Bushra. You are part of our panel from the beginning. She's an infectious disease physician at Aga Khan, who's also the president of MMI DSP, and she has served as the national coordinator of the Common Unit for Management of HIV TB Area Grants in the National Health Service Regulation and Coordination. Hanji Bushra, thank you for your patience, and please go ahead. Thank you for having me. It's been a pleasure throughout. So my comments regarding the situation of HIV in Pakistan is that actually the decision makers are largely public health personnel, and the program is entirely donor funded. So the country has never owned either the disease or its funding or its control strategies. So it is just like somebody foreign to the country just comes up to us, tells us, see, this is your problem. You have to address it. We are going to fund you, and this is what you have to monitor. So no ownership. That's the biggest problem. Then lack of patient-centeredness in whatever strategies are implemented.
So patient is not taken as a whole. Only the HIV part of the problem is addressed, and the center is labeled with a huge board and a big stigma along with it. It is called HIV Center. Everyone knows that people reporting to the center are HIV positive, and obviously there is this huge stigma linked with it. So it's not surprising that many people would not seek care at all just to avoid the stigma, and that hasn't been addressed at all. So no attempt to reduce this kind of stigma or to make it easy for patients to seek care, and no integration of HIV care with NCDs and care of other infections. The importance of TB has been emphasized again because the donor is asking for it. It has not come from within or from the country. Nobody suggested it from Pakistan. So it's a requirement of the donor and it has to be measured, and that's why people are being screened for TB, and same holds true for hepatitis B and HCV and syphilis and so on. So those are the requirements of the donor. So I think our major problem here is that total reliance on the donor, not owning the illness, not owning the patients, and then having a faulty strategy for control of the disease by actually treating HIV as a condition in silo. So somebody who has HIV doesn't have just HIV. He or she may have, will have other problems like young women in the reproductive age group. There is nobody to look after them. Again, very badly stigmatized, and no attempt at integration of HIV into regular health screening and regular health programs. Secondly, the other problem which I'm very worried about is that people or physicians are posted at HIV centers actually against their will. So there are many doctors who do not want to take care of HIV patients, but they are posted because they're just forced to work at HIV centers, so they just do it as a job without actually taking any pride in the service they are performing. So these were the major points. And lastly, HIV is one of the conditions where you cannot lament that there are no funds to address the issues. So we have adequate funds. It's just that we do not know how to use them and how to maximize the benefits which can come out of this fully funded program. So that's all I have to say. Thank you. Thank you, Bushra. Excellent observations as always. Okay, I think Dr. Umair is wanting to finish up. So I'm going to go back to him and then we'll have some questions. Dr. Umair, do you have a few slides you wanted to run, or? I don't know if his connection is there. Dr. Hudadad Khan, did you want to say something? जी जी मैडम मैंने दो तीन चीजें मिस की ये प्रेजेंटेशन में। वो ये थी कि प्रॉब्लम्स जैसे डॉक्टर बुशरा भी बता रही हैं, स्टिग्मा एग्जैक्टली मुझे मेरे जहन से निकल गया। स्टिग्मा इज सच कोई हमारे लिए इशू नहीं, लेकिन हेल्थ प्रोवाइडर्स जो स्टिग्मा कर रहे हैं, जो स्टिग्मेटाइज हो रहे हैं पेशेंट और जिनका हेल्थ सफरिंग्स हो रही हैं, वो है सर्जिकल साइड ऑफ आवर हॉस्पिटल। पेशेंट वार्ड्स में एडमिट हो रहे हैं, पेशेंट चेस्ट फिजिशियन के अंडर ट्रीट हो रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के अंडर ट्रीट हो रहे हैं, और नहीं हो रहे तो सिर्फ सर्जिकल साइड। वो हमारे वाकई मिसकंसेप्शंस हैं। हमारे ये सर्जिकल डिपार्टमेंट के जो भी वो कंसर्न्ड स्टाफ है और टीम है, उनमें बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंसी है कि वो HIV केस को, माइनर केसेस भी वो हैंडल नहीं करते और वो रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे जो विद इन द हेल्थ सेटअप है, वो स्टिग्मा सिर्फ हम जो बहुत फेस कर रहे हैं, उससे बड़े पेशेंट्स और बड़े एक्यूट प्रॉब्लम, सर्जिकल प्रॉब्लम के साथ पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे ब्लीडिंग हेमराइड्स है और इस तरह ये अपना लिम्फेडिनोपैथी के साथ लिम्फ नोड बायोप्सी, इवन वो तक भी वो पेशेंट की करने से हेजिटेट करते हैं। तो इसको हम स्टिग्मा में अगर फिट करें तो वाहिद ये
डिस्क्रिमिनेशन होती है और वो उनको रेफर किया जाता है इवन फॉर अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। और यही वजह है कि हम बहुत सारे केसेस जो लिम्फेडिनोपैथी के हैं, रिएक्टिव लिम्फेडिनोपैथी है, टीबी है या कोई लिम्फोमा है, हर चौथा पेशेंट अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमारा एब्डोमिनल लिम्फेडिनोपैथी के साथ आता है और हम वो केसेस मिस कर जाते हैं। और आगा खान में डॉक्टर फैसल साहब अगर बैठे हैं तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी केस विल बी डायग्नोज्ड। शायद वो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करा के लिम्फ बायोप्सी या कोई भी बायोप्सी वगैरह करा के टीबी रूल आउट करना या कोई और डिजीज रूल आउट करना बड़ा उनके लिए ईजी है। तो ये जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन हमारे सर्जिकल साइड, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। अदरवाइज जो हमारे बड़े यूनिक हमारे डायनामिक्स हैं और हमारे प्रोविंस के कि हमने बिल्कुल सरप्राइजिंगली हमारे पास स्टिग्मा, अदरवाइज स्टिग्मा बहुत ही कम है। और ये पिछले दिनों एक रिपोर्ट शाया हुई थी इंग्लैंड से, हमारे कोई यंग बंदे ने ये जो 2010-12 का जिक्र किया और उसमें बड़ी माइंड ब्लोइंग चीजें दी और उसमें स्टिग्मा को बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखे, तो वो बड़ा एक टची और बहुत ही एक रेशनल अप्रोच थी, रेशनल स्टडी। तो मैं नहीं समझता कि 17 सालों में हमारे जैसे ट्राइबल सेटअप में लोग जो रह रहे हैं और उनमें कोई कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या पीयर के अमंग कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जस्ट हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो हेल्थ वर्कर्स या जो हमारे स्पेशलिस्ट कैडर है वो जी, थैंक यू डॉक्टर बैकअप उस्मानी, नहीं दे रहा। थैंक यू जी। और एक जो हमारी कम्युनिटी है मैडम, इंजेक्ट साइमा इस यूजर्स को हमने बहुत, तो हमारे यहाँ जो सबसे अंडर रिपोर्टेड एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो कोल माइनर है, कोल माइनर। और वो मेरे पास रिपोर्ट बहुत कम हुए हैं। अगर कोल माइनर पे काम किया जाए तो ये रतोडेरो और आपके जो और जगह जो बड़े सर मैं कोई पॉइंट पूछूं आपसे नंबर ऑफ केसेस निकले हैं HIV के, अगर एक्सप्लॉइट हो वहाँ तो वो बहुत केसेस वहाँ से आएंगे और वो अंडर प्रिविलेज्ड हमारा ये ग्रुप है और थैंक यू, कोई कभी टच नहीं किया गया। थैंक यू वेरी मच। ओके, डॉक्टर उमेर हैज सम क्वेश्चंस फॉर यू। डॉक्टर उमर प्लीज जरा क्विकली करें, हमें जी मैं क्विकली करें। एक तो मेरा सवाल डॉक्टर उस्मानी से है, उससे पहले मैं दो चीजें बताना चाहूंगा बलूचिस्तान के बारे में। फॉर एपिडेमिक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड and which is only 5.9% of total Pakistan population. So there is huge disparity. आबादी बहुत कम है और the services are very remote and only 27% are urban. दूसरी बात ये कि कुछ areas are very close to Karachi, which has maximum number of HIV cases in Pakistan. तुर्बत का एक issue है, low coordination है। जैसे I talk to Dr. Usmani every day, but I have never talked to my physician in Turbat. दूसरा मेरा इशू ये डॉक्टर उस्मानी से मेरा सवाल ये है कि he said that truckers and housewives are almost 18% in the BMC center. I understand that truckers are high risk, but what do you think are the reasons of high 18% of housewives, which is not in line with the national figures? Dr. Usmani? जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जैसे हमने कहा 18% के करीब ट्रक ड्राइवर्स और ये हैं, तो डेफिनेटली वो उनको अपना स्टेटस बड़े अरसे तक पता नहीं होता और वो हाई वायरल लोड के साथ रह रहे हैं, तो यकीनन उनकी स्पाउसेस पॉजिटिव निकलेंगी इन फ्यूचर और वो रिपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि जो भी केस हमारे पास आता है पॉजिटिव, उनकी मैरिड कपल को, उनके स्पाउसेस को हम हमेशा स्क्रीनिंग करते हैं। तो मेरे फिगर में आपने देखा होगा हमारी जनरल पॉपुलेशन 70% है। बाकी जो आपके ये जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स जो बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, और आपने भी कहा कि 38%
तो मैं तो इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क दूंगा कि जी ये 38% और जो आजकल बड़ी ओपन बातें भी हो रही हैं, ये डेटा मुझे नहीं लगता कि वो ऑथेंटिक है या किस पर्पस के लिए फंड्स इसमें बहुत ज़्यादा लेने के लिए किए गए हैं। IBBS एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डेटा था 2005 में, वो अपरेंटली नज़र आ रहा था, सपोज कोयटा में हुआ है। तो मैं तो बिल्कुल इसमें क्लियर है कि अगर सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स 18% है तो उनमें 15% तो मेरे ट्रक ड्राइवर्स शादीशुदा हैं, और हर अक्सर 90% पॉजिटिव मेल की स्पाउसेस पॉजिटिव निकलते हैं, जनरल पॉपुलेशन का हो चाहे वो रिस्की ग्रुप्स का हो। तो डेफिनेटली हमारे पास 400 के करीब फीमेल्स हैं, तो ये कोई ऐसे सरप्राइजिंग कोई डेटा नहीं है। सॉरी टीजीज बहुत कम है बलूचिस्तान में। जी टीजीज कम है, मैंने ये डिस्कस करना था। टीजीज का बड़ा एक यूनिक इनके बिहेवियर के डायनामिक्स हैं और हेल्थ सीकिंग बिहेवियर इनका नहीं है, और नो डाउट इनके साथ वाकई स्टिग्मा बहुत अटैच है, और ये अपरेंटली नजर आ रहे हैं लुक पे, और ये टू फ्रीक्वेंट माइग्रेट हो जाते हैं। कोयटा में अगर 1 महीना है तो वो फौरन सर्दियों में कराची या पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं, और गर्मियों में वहाँ के टीजीज भी इधर आ रहे हैं, सिंध के भी आ रहे हैं, फिर वो किसी और शहर में मूव कर रहे हैं। तो ये इनका बड़ा एक इशू है। और जैसे मैंने कहा इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स और ये टीजीज, और जिसपे सबसे ज्यादा फंडिंग और प्रोजेक्ट और ये इनमें हाई प्रेवलेंस बताई जाती है। कुछ कमेंट करूं? तो मेरा डेटा तो इसके बिल्कुल डॉक्टर उमर प्लीज क्विकली करें, वी हैव टू स्टॉप एंड आई विल टेक 2-3 मिनट्स एट द एंड। थैंक यू। आई जस्ट वांट टू वाइंड अप मेरा वाईफाई कनेक्शन। एक तो ये कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान इज बॉर्डरिंग 3 इंटरनेशनल, ईरान, अफगानिस्तान, जहां 79 से वॉर हो रही है, पॉपुलेशन आ रही है जा रही है, और मेजर बर्डन बलूचिस्तान ने लिया है। तो मूवमेंट से HIV रिस्क, और दूसरी ये कि जो बॉर्डर ट्रेड है चमन से सारा सेंट्रल एशिया तक जो ट्रकर्स का डेटा है। तीसरी बात ये कि गवादर इज एंड सीपैक, वी हैव अ ह्यूज चाइनीज पॉपुलेशन, और अब जो सेक्स वर्कर्स जो हैं वो मूव करते हैं जहां जहां लोग हो, तो होटलिंग इंडस्ट्रीज उनका। और लास्ट थिंग इज इंसर्जेंसी, कन्फ्लिक्ट है। तो हम इस सारी चीजों को, जो डॉक्टर उस्मानी ने एक पॉइंट में बताया कि माइन वर्कर्स आर another area which is, and thank you very much. Thank you so much. Saima, I just want to take a few minutes. This is for everyone. Actually हमारा ये project ऐसे planned है कि we will do 4 webinars for each province. So today is Baluchistan, then we need to do Punjab, Sindh and WFP. So my request to all our participants, so please be ready. If you are from Punjab and you want to be part of this team, please prepare for presentation. And if you are from Sindh or from any province, so we have 3 more provincial, and then we will request 1 federal clinic presentation from PIMS. And at the end, me and Saima, we will present what is a model clinic here, how we take care of HIV patients in Rhine-White clinics. And that is where my work comes in. I work in a Rhine-White clinic. So after that, we will see how we can improve and how we can build a capacity in Pakistani RT centers given the Rhine-White model. And that will be end of this year, inshallah, or we hope that all of you will join us to take these discussions on to other level, so we can do more capacity building in Pakistan. Thank you. Thank you very much, Fiza. Thank you very much, everyone. If there is any other question, or it's already been almost 1 hour 40 minutes, I think we can close the session. And thank you so much for participating and attending and for caring about HIV. Again, a small point, Saima. I see many participants working in the ART centers are very hesitant to talk or very hesitant to join our team. I really encourage, we are not affiliated with any political party, and we don't have any other agenda other than helping Pakistan HIV providers. So please be ready, please come out and join our team. Thank you very much. I would also want to say one thing, Fiza. If you anonymously, if you are afraid, if you have an issue, please, you can anonymously reach out to our email,
And we would just need to get the issues discussed. We don't want to put anybody in any trouble. So please bring out the issues and we will be your voice, inshallah. Inshallah. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.